So I started thinking about different contradictions, and I started my journey from 84, went to Saudi Arabia, then Dubai, and since 90 I am in Europe. And in Europe I started studying different things because first time I got an opportunity to have free studies or free education. In Pakistan, everything is distorted, the history, the religion, everything. So when I got opportunity to have free studies, I came across Altaf Hussain. He is leader of MQM party, which is for Muhajirs, those Muslims who migrated to Pakistan from India. And he contacted me in Belgium when I was living there in 93 that there is a military operation in Pakistan and you have a French nationality, traveling facility, and you speak English and French, so why don't you do lobbying? And then I came into human rights work, started going to United Nations Human Rights Council, Geneva, every year 3 times for multiple weeks, and speaking about atrocities of Pakistan army in Pakistan. And that's why I am in human rights thing. But when I got deep into history, I had a feeling that the most oppressed people of the world are Hindus, because they are under attack since more than 1,000 years, and they are the most peaceful. And the Sanatan philosophy, in, for example, Christianity, Islam, when there is a war, if Muslims win the war, the women of opposing army or people are slaved for life, and distribution of girls and all these things used to be a reward for the people who were waging the war. But in Hinduism, there were so many wars between different rajas of different states of India, but there is not a single example that women of losing Raja are enslaved by the victorious Raja. And that is the beauty of Sanatan, that the philosophy of life that comes in Sanatan is pure charter of human rights. United Nations Human Rights Declaration of Human Rights was adopted in 1951, but same charter is in Bhagavad Gita, which is thousands of years old. So all this came into my mind, and I started feeling, because everyone has a history. Some people born in one place, lived whole life in one place, they don't have that much to explore. But for me, parents born in India, I was born in Pakistan, lived in Saudi Arabia, Dubai, then Europe. Now in today's condition, I was thinking that I am a Pakistani, living in London, having French nationality. Who am I? And then I realized that I am an Indian, because my connection to India is thousands of years old. But with Pakistan, I lived there only 20 years. Born in 64 and left in 84. So neither I am French, nor I am British, nor I am Pakistani. I am Indian. Am I Muslim? I started feeling that no. Inside me there is a Sanatani, because I believe in humanity. And the only religion in the world which believes in humanity is Sanatan. In Quran, last sermon of Prophet Muhammad, he said that today I have completed your religion. Islam is your religion. You follow it. If you don't follow this religion, you will be burnt in hell. Now, I had a question since beginning that, for example, if I have 3 children and I have set them a rule of life,
And I tell them that if you don't follow my rule of life, I will burn you in hell. So I started thinking that how merciful this God is that he is burning his own creation. So the reply came from Bhagavad Gita. Bhagwan Krishna says to Arjun that I have given you all the jnana. Now it's up to you. You follow it or you don't follow it. So that is the beauty of Sanatan. So I started feeling that this is the closest of philosophy for humanity. So I believe and openly I have declared that yes, I am Sanatani. I went to India last year, and before going, there was a wish list that I will go to Somnath because it is my mandir of my generations, old people, 50 kilometers from my village where my parents were born. So it was a long time wish to go to Somnath. Then I had a wish to go to Ayodhya, Mathura, Kashi. Kashi I could not make it, but Ayodhya, Mathura. So a Pakistani sent me a message that, will you visit a mosque in India? And I said that if there is a real mosque, I will go. If it is built on a mandir, I cannot go. So give me an address of a mosque which is built on a free land. And he kept quiet. I went to San Diego. I went to 2 mandirs. I went to Los Angeles last week. I went to mandir there. I came to New Jersey. I am in mandir. On Monday I am going to Swaminarayan Mandir. So it is an honor for me that I am accepted. And nobody came to do tabligh to me. In Islam, people go to do tabligh and give you false narrations to become Muslim. But nobody came to me. Even my Hindu friends in London, they never asked me, are you Hindu? Are you Muslim? They never asked me. So this is the beauty of Sanatan, which gives coexistence, sharing the life, sharing the honor, dignity, and respecting each other. So that's why I am close to this philosophy of life. Now coming to Hindu-fobia and the lobbying that I am doing since last few years, my point is that in 2019 or 2020 there was a resolution adopted in United Nations on Islamophobia. And at that time I also spoke in United Nations in my speech that it should be a resolution for religiophobia, because it is not only Islam that is humiliated, it is Hinduism also. And in Pakistan, every religion is humiliated. Churches were burnt about 2 weeks back, 42 churches. Hundreds of Bibles were burnt. So that is Christianophobia then. Then Sikh girls are, Hindu girls are kidnapped in Pakistan. So religiophobia should have been the word. Islamophobia is a term which is used for blackmailing. What we saw in Nupur Sharma case, what we saw in Kajal Hindustani case, what did they do? They just spoke truth, simple truth. They spoke about Prophet Muhammad and his marriage. Every Maulvi accepts it that yes it is. What else Nupur Sharma said? Or she did not humiliate, she spoke about a truth. Now she can never live a free life. Salman Rushdie, after 42 years, he was attacked. So people like us, now our life is always in danger, no matter what we do. So speaking truth is not Islamophobia, but they have adopted a resolution from United Nations. Now, a couple of months back, Quran was burnt in Sweden. So again, Pakistan went to United Nations to move a resolution that burning Quran or burning a mosque should be punishable under international law. And Morocco said that no, this is not the correct way, because it is not only Islam. It should be every religion. The word should not be Islam, every religion. Word should not be mosque, every place of worship. And word should not be Quran, every religious book. So then after Morocco's intervention, the resolution was changed and adopted.
even though European Union had objected that it should not be said against international law, punishable against as per international law, because it should not be an universal code or law. But then it was adopted by the UN. So I was happy that at least it is not against only Islam, it is about every religion. But my question is that how can we change it? Because to change international perception about Hinduism, today Hindus are called extremists, Hindus are called Hindutva extremists, while extremism is cannot be attached to Hinduism. Hindus are never extremists, but the international lobbying organizations, Muslim organizations backed by people like George Soros and all these things, there is so much of voice for genocide of Muslims in India. While I am asking any one of you, or I have always challenged in my video, that if anyone can give me a list of 100 Muslims killed on the base of religion in last 10 years in India. 100. But in Pakistan, You get thousands. biggest Muslim genocide is happening in Pakistan. Sindhis are Muslims, they are killed. Bengalis were Muslims, millions of Bengalis were killed. Baloch are Muslims, Pakhtuns are Muslims, then Shia are killed by Sunnis, Sunnis are killed by Shias. Is there anyone speaking about Muslim genocide in Pakistan? No. But every think tank, every international media house, New York Times, Washington Post, we saw last month there was a Hindu procession going on with murtis in Haryana, and there was stone pelting, patharbazi on them. One Muslim Maulvi was killed, 5 Hindus were killed. But international media spoke about Maulvi Saad was killed. A Muslim Maulvi Saad was killed by Hindutva extremists in India. What about those 5 Hindus? So who is weak? We are weak because we are not promoting our the atrocities on us. We are not lobbying. One Muslim was killed, every Muslim was tweeting about it. Every Muslim was Facebooking or Instagram or making videos. Rana Ayub, even Hindu Rajdeep Sardesai, Barkha Dutt, they were also speaking about it. But no, do you remember any one name of those 5 Hindus? Nobody remembered. But one Muslim, Saad, was killed and everybody knew about it. So we are weak. Our approach is not matching. Matching is not wrong. It is wrong word because we cannot match them. 56 Islamic countries, not a single Hindu country. While there are about 1.5 billion Hindus, 1.75 billion Muslims, they have 56 countries. Nupur Sharma case came, Qatar, Turkey, entire Muslim world started speaking. But when something happens to Hindus and we go to our Hindu brothers that let's raise our voice. नहीं यार हम सेक्युलर हैं यार, हमको इसमें नहीं घसीटो, हम इन चीज़ों में नहीं बिलीव करते यार, ये गलत है यार. अरे नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि जाओ मुसलमानों को मार दो या किसी को मार दो, ये तो सिखाता ही नहीं है सनातन. हम तो मारने की बात नहीं करते. लेकिन देखें, जब धर्म खतरे में होता है ना, तो भगवान राम भी रामायण जंग लड़ते हैं. अहिंसा के पुजारी थे लेकिन जंग लड़ते हैं. महाभारत दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग भगवान कृष्ण की जंग थी. और हम कहें कि नहीं, हम उनसे ज़्यादा अहिंसावादी हैं, लेकिन हक के लिए, धर्म के डिफेंस के लिए, अपने लोगों के डिफेंस के लिए वी हैव टू डू इट. And the best way to do is we peacefully working here, business, job, whatever we are doing, at least we can commit our time, a little bit of time.
we can speak fearlessly. If we started feeling अरे हमारे बराबर में मुसलमान रहता है, मेरे बच्चों को खतरा है, नहीं, वो क्यों नहीं सोचता भाई? हम क्यों सोचते हैं? अब there is a friend in London. He called me about 3-4 years back. He said, आरिफ भाई वो आप मेरे घर आ सकते हैं, मेरी बेटी को कुछ समझाना है. मैंने कहा क्या समझाना है? बोला वो मुसलमान लड़के के चक्कर में है और मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तानी लड़का उसको लव जिहाद कर रहा है. मैंने कहा तुमने नहीं समझाया? बोला नहीं. तो मैंने कहा जब माँ बाप नहीं समझा सकते तो मैं क्या समझाऊंगा? बोला नहीं, आपको समझाना अच्छा आता है, आइए. I went there and I spoke with the child. She was 19 years old girl. And she was madly in love with him. She left her parents' home and went with him. I could not save her. And then another time he called me, he said that आरिफ भाई बहुत परेशान हूँ. मैंने कहा क्या हुआ? बोला वो मेरे बराबर में पाकिस्तानी रहता है, रोज़ सुबह मेरा 8 साल का लड़का जाता है उधर बस स्टॉप पे स्कूल जाने के लिए, तो वहाँ जाके इसको कहता है कि तुम तो जन्नत में नहीं जाओगे, तुम तो जहन्नम में जाओगे क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो. वो लोग ये करते हैं फियरलेसली. हम उस पर आवाज़ उठाने से भी डरे. कैसे चीज़ें चलेंगी? ये है कि एजेंडा के हिसाब से तो वो टॉपिक आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि हम जितने भी हैं मिल के कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं. लेकिन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. देश हमारा है, चाहे हम अमेरिका में रहें चाहे लंदन में रहें, हमारा है. और अभी लॉस एंजलिस में भी मेरा टॉपिक था अबाउट सनातन, और मैं उसमें उन लोगों को यही कहा कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी लिविंग अब्रॉड इज टीचिंग आवर चिल्ड्रन अबाउट गीता, अबाउट आवर धर्म, about our philosophy, about our culture, about our heritage. If we don't pay attention to teaching our children a little bit of our heritage, of our philosophy, then it is our crime. I will not say mistake, it is our crime. Because it's a beautiful philosophy. And most of the children in abroad, Indian children, they don't know about it. And parents also avoid that. यार हम उनको इन चक्करों में नहीं डालते. अगर आप इन चक्करों में नहीं डालोगे तो कोई मुसलमान इनको मेंटली हाईजैक कर लेगा और फिर वो अपनी फिलोसॉफी इस तरह से डालेगा क्योंकि उसका दिमाग कोरा होगा. अगर आपकी फिलोसॉफी होगी तो उसके जहन में सवाल आएगा कि यार हमारे हिसाब से तो ये होता है, ये तो गलत चीज़ें बता रहे हैं. जैसे मुझे सवाल हुआ कि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है, तो करती है ना भाई. अगर मैं अपनी फैमिली को नहीं कन्विंस कर सकता तो मैं दूसरों को क्या कन्विंस करूँगा? और अगर इफ़ आई एम करेक्ट, इफ़ आई बिलीव इन ए करेक्ट आइडियोलॉजी, then I can convince others. But if I don't believe, for example, Pakistani ISI used to often contact me. हम तुम्हें कश्मीर का पूरा सेटअप बना के देते हैं, महीने का इतना पैसा देंगे, बजट होगा, इंडिया के खिलाफ काम करो. मैं उनको एक ही जवाब देता था कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं झूठ का प्रचार नहीं कर सकता. आई कैन ओनली स्पीक अबाउट ट्रूथ. एंड द ट्रूथ इज दैट यू आर ऑपरेसर. Pakistan Army, you are oppressor. So how can I advocate you? I cannot be advocate of devil. So I'm sorry, I cannot. So again, if I cannot convince my family, and I convince, for example, to my children, they ask me that how do you think that it is against humanity? I said one simple answer, that 50% population of the world is female. Women. Islam has not a single right for women. Because when I told to my daughter that when you were born, I had to do Aajakia. Aajakia means cutting a bakri, goat, and serving friends and families. I said, but when your brother was born, my obligation was 2 bakri. For girl is 1 goat, for boy is 2. I said, why differentiation while both are my children, both are human beings? Then in court, 2 women, 1 man witness.
In heritage, boy gets double than sister. And the biggest thing is that my wife cannot go out of home without my permission. If I am not there, without my son's permission, she is totally a slave of mahram. Mahram are four relations: father, brother, husband, and son. So 50% population, according to Islam, have no human rights. I told to my children that, how do you feel? So I can convince my family, I can convince people. I'm always open to learn also. For example, here I'm sitting, I'm challenging you that whatever I'm saying, correct me if I'm wrong. And I'm not a stubborn person that I will say, no, 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 no. I will accept it if I'm wrong. But correct me. I'm always preaching whatever I believe in. And I believe that India and Hinduism needs support of its follower. We don't have. And that's very sad. But again, encouraging point is that in last few years, more and more Indians are coming back to its origin, and people are showing concern on social media, on physical activities. We had 70 Indians gathered for a protest last year in London. There was never ever a protest by Indians. So at least it started. First day. And slowly but surely, if so these people we are here, if we started preaching whatever is we think that is correct, then I think we can make big changes. Dhiren bhai? Yeah, so if you want to talk a little bit about your maybe life history, maybe that will be good for others. Well, I am working on multiple projects. For example, YouTube is my medium from which I can preach whatever I believe. Then social media, Twitter, Facebook, Insta, LinkedIn, all these. And then I have created an organization, Asian Human Rights Forum. The basic goal of this organization is to speak about atrocities committed by Pakistan and China on their own people and on regional. For example, Pakistan is always investing in proxy wars in India, in Afghanistan, which is against the international law. But who is speaking about it? Nobody. So Asian Human Rights Forum, I have created this forum, and I'm issuing a newsletter every month of this Asian Human Rights Forum, and we have a mailing list of 4,500 people, in which there are US congressmen, US senators, British Parliament members, European Parliament, French Parliament, German Parliament. There are 200 embassies in United Kingdom of every country of the world. There are professors of different universities, economic professors, international affairs professors, media houses, think tanks, NGOs. We are sending through email. And all this is done by me alone. I am creating the material, writing articles, a 10-page newsletter with different stories. Like last month I had stories on minorities of Pakistan. Before that it was on Balochistan, cover story. And then Sindhu Desh, sanitation workers of Pakistan, Uyghur Muslims of China. Different stories we bring it up. But constraint is that I am contributing my time, my energy, putting my and my family's life on risk. But financially, I'm not a strong person because I'm living in a rented house in London, and I cannot contribute financially. Now, these kind of lobbying works, for example, this newsletter, if I print it in 500 copies,
So it means that I need 5,000 prints, 10-page newsletter, 5,000 prints. Then I need to post it because email is not correct format. Most of the people, they don't check it, they don't read it. Most of them go to spam folder also. But if you send by post to someone, a congressman or senator, it goes into a file. And after 1 year, there are 12 newsletters in that file. Then, for example, Dhiren Bhai in America, he is sending this continuously to his congressman, and then he can write a letter or telephone that I need an appointment. And then he goes there and says that, look, this is Pakistan, this is China, this is India, about human rights, about these things. That is called lobbying. One person cannot do. So we can work together in this. We can highlight human rights issues in India, for example. There are so many reports of United States Committee on Religious Freedoms, USCIRF. But why does not it speak about Pakistan, where there are no human rights or no religious freedom? They speak about minorities in India. What about minorities in Pakistan? On a ABC report is there that on average 1,000 Hindu girls are kidnapped in Pakistan and forcefully converted. Why there is no movement like there is a movement about minorities in India? There are so many organizations working under Islamic name, Indian American Islamic Association. And they are very strong because they have funding, they have people committed, but we don't have any such forum. So at least from ruins or from beginning, we can start with a few people. And I'm, due to my commitment to social media, I am in contact with people in Australia, in New Zealand, in Europe, France, Germany, Belgium, Holland, UK, America, Canada. We can make a joint effort, and in these countries, with the government or elected representatives, with local NGOs, with local think tanks, we can meet them and we can हम प्रचार करें अगर हम अपने उसका, I think we can make a difference, at least little bit, but we can make a difference. It is not that we are going to fight with someone or we are against anyone. We are not against anyone, but we are here to counter negative propaganda which is going on against us. That's the only purpose. So I think that we should do something. Yeah, hi. Just this is a one small thing. मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि लोग हिंदी समझ रहे हैं या फिर इंग्लिश में बोलूँ? बिल्कुल। हाँ? Okay, good. पक्का हिंदी में बोलो। So thank you very much. क्योंकि हम Thank you आरिफ भाई, आपको हम बहुत फॉलो करते हैं. Thank you. This is one of the things which we are doing it. So basically क्या है कि for the last 3.5 years ago, देव हम सब मिले थे. आप वहाँ पर हम लोग ने सोचा था कि हिंदूज एक साथ नहीं है. आगे रीजन देखो, सब एक साथ हैं. तो हम लोग को एक आइडिया आया था कि हम लोग एक साथ करेंगे. एंड हमारा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो हम लोग ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है. एंड दिस इज एप्लीकेशन, इट्स अ ह्यूज एप्लीकेशन. इट्स अ फेसबुक कबाब है ये. तो इसमें हम लोग फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सबको मिक्स करके और भी बहुत ऐड किया है इन्होंने. बहुत या ऑब्वियसली हमारा इनिशिएटिव था, सब लोग मिलकर किए. यस मैम. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप भी ये एफर्ट कर रहे हो. यहाँ काफी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कर रही हैं, राइट? और वो अपना अपना कर रही हैं. जैसे आज आप लोग यहाँ पे आए हो से, एक और है जब हो रही है, कई है, राइट? उन सबको कैसे इकट्ठा करना है? जब तक हम वो नहीं कर पाते ना, हमारा अपना अपना तो नहीं होगा. बिल्कुल सही बोल रहा है. उसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं. ये हम लोग ऐसा बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया है. हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप फॉलो करो, नो. हम लोग ये प्लेटफॉर्म बनाया है.
इसमें हम लोग ये भी किए हैं कि जिससे कि मैं आपका हाईजैक नहीं कर रहा हूँ आपका नहीं, सेशन को, बिल्कुल। बस यही बोलने के लिए हम सब जगह जा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप मोबाइल वर्जन भी है इसमें, और इंडिया में यदि कहीं पर भी कुछ भी हुआ आप इमीडिएटली उसका फ़ोटो ले सकते हैं। आपको उसमें लैटिट्यूड लैंग्वेज सब ले लेंगे हम। हमारा हमारा जो सिस्टम है इंटेलिजेंट, बहुत AI सिस्टम बेस्ड सिस्टम है, वो सब कुछ कैप्चर कर लेगा और वो सबको पूरा होल वर्ल्ड को भेज देगा। उसके बाद हम लोग के पीछे बैक एंड में लोग बाग हैं जो उसको लेके पर्टिकुलर मंदिर उसको भेजेंगे। मंदिर के साथ एसोसिएट होकर सब लोग, हम जब हिंदू होते हैं जनरली से आप जैसे जानते हो अच्छी तरह से कि हम लोग थोड़ा सा धर्म से थोड़ा दूर भागते हैं, किंतु हम लोग का मेन मोटो है कि यदि हम टेम्पल को एक साथ करें और टेम्पल के साथ में हम लोग हिंदू को एक साथ करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस जगह में ये एरिया हो रहा है, आप लोग वहाँ पर जाओ। तो ये जो इनिशिएटिव जो है वो हम लोग सोच रहे हैं इंडिया में। हम लोग ये लास्ट महीने में इंट्रोड्यूस किए थे जब तथागत आए थे। तथागत इज बेसिकली इज फ्रॉम बंगाल, आई एम बंगाली। सो जब वो लास्ट मंथ में आए थे 22 तारीख को, तो हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बट नाउ इट्स फुल स्विंग में हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं। आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में जो दीदी क्या कर रही है, समझ रहे हो ना आप? आई डोंट हैव टू गो इन डिटेल, राइट? यू नो एवरीवन। So now we want to introduce this in a global way, but since I'm a Bengali, I'm trying to put that thing into Bengal also, plus other areas too. So अभी फिलहाल के लिए हम लोग ने करीब बहुत सारे US based temples को हम लोग ने अप्रोच किया, everyone has joined it, and now I want to request you that if you can go and, क्योंकि देखिए जैसा उन्होंने बोला था कि हम लोग थोड़ा बहुत डरते हैं। डर हम लोग में नहीं है, बट हम डर गए हैं। फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स हम लोग को दबाया गया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई फ़ोन नंबर नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो कांटेक्ट करेंगे। हम लोग ईमेल दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग दे रहे हैं सो दैट आइडेंटिटी जो है वो हम अपने आप को सेव रख रहे हैं, सो दैट दे शुड नॉट फॉलो आवर पीपल एंड किल देम, बिकॉज दे आर वेरी गुड इन किलिंग, वी आर नॉट। हम लोग का अस्त्र चलता नहीं जब तक ना लास्ट मोमेंट बना जाए हम लोग। So anyway, so with this, I just want to say that I will request you also, you can take it. आप जनरल में जहाँ पर भी जा रहे हैं, ये आप और जो कल तथागत को जानते हो ना, तथागत राय को जानते हो, क्योंकि he is a गवर्नर ऑफ इंडिया का 2 स्टेट है, एक आसाम और मेघालय का, प्लस बहुत पढ़े लिखे इंसान है। एंड ही वॉज ए प्रोफेसर इन ऑफ ए bits of the college in Calcutta, which is called Jadavpur College. Plus, he is a right in the railways ka. He was a CEO of the company, a very learned person. So he is after this. He says, I will make it happen in West Bengal. So if you can take it this, and everyone can, I will request, वहाँ पर फॉर्म है, तो इसमें आप जुड़िए, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जस्ट इन ए वेरी हाई लेवल। आप यदि जाना चाहते हैं, जैसा आपने बताया कि आप इंडिया घूमने गए थे, तो आप यदि टूर में जाना चाहते हैं, आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वो भी हम कराएंगे। उसके बाद हम ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप यदि चाहते हो कि आप अपना बच्चों का कुछ मुंडन कराना चाहते हो, तो आपके गांव के वहाँ पर जो पुरोहित, जो आप हमारे लोग वहाँ जाएंगे, पुरोहित को सामने रह के वहाँ से आपको पूजा कराया जाएगा। पंडित का जैसे सपोज आपने तारकेश्वर का में जाओगे, वहाँ पर आपको पूजा मन्नत है सपोज, तो वहाँ पर आपके सामने फोटो के साथ आपको वहाँ पर, आप भले यहाँ पर हैं तो आप वर्चुअली रहोगे। आपका आजकल तो थैंक्स टू कोविड आप हम लोग वर्चुअल हो गए हैं, तो पूरा वर्चुअली आपको किया जाएगा। हम लोग ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, साथ चाहिए आप लोग का, सो दैट हम एक साथ हो सकते हैं एक प्लेटफॉर्म में। एनी क्वेश्चंस? So basically, Anita ji, it's a platform. Everybody can put it there. So this is the way अलग-अलग branches can come in. Sure. Thank you. Thank you. Yeah. So we have now question answer for Yeah, please. Arif ji. Thank you. Anybody who has question for Arif bhai, go ahead. So नमस्कार आरिफ जी। So आपसे एक ही सवाल था कि बेसिकली जैसे आपने बताया कि एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का जो प्राइमरी टारगेट या प्राइमरी फोकस एरिया है वो पाकिस्तान और चाइना है, और पाकिस्तान थोड़ा कम, चाइना तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये सब चीज़ें काउंटर करने में भी, क्योंकि यहाँ पे कई चाइनीज़ ग्रुप्स हैं जो कि चाइना में हो रहे
मानवाधिकार के इसमें लिखते हैं, बोलते हैं, और अगर आप उनसे बात करेंगे तो मालूम पड़ता है कि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उसके लोग यहाँ पर भी हैं उनको ख़त्म करने के लिए, बेसिकली कि उनको टारगेट करके कैसे किस तरह से, तो उनसे लड़ने के लिए एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है। तो आपने जैसे बताया कि आपके पास कोई सोर्स ऑफ फंडिंग है नहीं इंडिपेंडेंट, तो ये तो ऐसे, और आपके से कई लोग हैं यहाँ पर जो कि बेसिकली अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उनको एक फाइनेंशियल बैकिंग मिल सके, एक फंडिंग मिल सके एक जनरल तरीके से, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं बेसिकली? देखें, उसके लिए ये है कि हम जैसे आज हमने एक इनिशिएटिव लिया है। अब एक मिसाल है, हम सब जुड़ जाते हैं आपस में, तो एक जैसे न्यूज़लेटर आया, आप भी अपने अपने ईमेल कॉन्टेक्ट्स हैं जहाँ पे पहले तो आपको कॉन्टेक्ट्स बनाने होंगे, आपको मुख्तलिफ NGO से, थिंक टैंक से, अपने कांग्रेसमैन से, अपने इलाके के लोगों से, अपनी स्टेट काउंसिल से कॉन्टेक्ट्स बनाने होंगे। फिर आपको वो चीज़ें खुद भी बनानी है, जैसे आर्टिकल में लिखता हूँ 10 पेज का न्यूज़लेटर, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप भी स्टोरीज उसमें लेके आ सकते हैं। माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के नाम से मैंने आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप जब माइनॉरिटी की बात करें तो आप एट्रोसिटीज़ की बात करें। भारत में माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हासिल हैं। अव्वल तो माइनॉरिटी भारत के उसके साथ जुड़ता नहीं है, इसलिए कि सेक्युलरिज्म हैज़ नो माइनॉरिटी, सेक्युलरिज्म हैज़ नो स्टेट रिलीजन, so when there is no state religion everybody is equal, like in USA there is no minority, there is everyone equal। माइनॉरिटी वहाँ होती है जहाँ पे स्टेट का रिलीजन हो। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में माइनॉरिटी हो सकती है, सऊदी अरब में हो सकती है, लेकिन सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ भारत, जब सेक्युलर स्टेट ऑफ अमेरिका या सेक्युलर यूनाइटेड किंगडम, उनमें हमारे यूनाइटेड किंगडम में 9-10% मुस्लिम हैं, उनको माइनॉरिटी नहीं कहा जाता। भारत में माइनॉरिटी है। अब अगर माइनॉरिटी को आप वो कर रहे हैं तो मेजॉरिटी के राइट्स क्या हैं भाई? मेजॉरिटी के राइट्स ये हैं कि इनके मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है। उनके मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ के लास्ट 1 साल में आप जितने भी फेस्टिवल आए हैं ना, रिलीजियस फेस्टिवल्स, उस पर पत्थरबाजी हुई है। मुसलमानों का भी मुहर्रम का जुलूस निकला, पीसफुली निकला, किसी ने नहीं कुछ किया। बकरा ईद हुई जो कि कॉन्ट्ररी टू सनातन फिलोसॉफी है, लेकिन पीसफुली उन्होंने मनाई। लेकिन हिंदू का फेस्टिवल आता है तो उनके ऊपर अटैक होता है, हमारे इलाके से नहीं निकलो। अरे भाई, तुम्हारा कहाँ से इलाका हो गया? सबका इलाका है। अगर बात इलाके तक आ गई है तो फिर 2 नेशन थ्योरी में तुमने अपना इलाका ले लिया था, एक भारत के ईस्ट में, एक भारत के वेस्ट में, फिर वहाँ जाओ अगर इलाके की बात है। क्योंकि उस डॉक्ट्राइन के तहत ये दिस वाज 2 नेशन थ्योरी में फिर इंडिया वाज हिंदू स्टेट, तुम्हारा इलाका नहीं है। कभी हिंदू ने कहा कि भाई ये तुम्हारा मुहर्रम का जुलूस हमारे इलाके से क्यों निकल रहे हैं? तो ये चीज़ों का हमको प्रचार करना है तो मिलकर करना है। हम अगर एक यूनाइटेड फोरम बना लेते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम पे करें, कोई और अगर आइडिया है हम उस फोरम को बना के और यूनाइटेड एफर्ट करें। बात सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक नहीं रहनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। तो होता क्या है कि हम सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, अब सब उसमें इधर उधर से ला के फॉरवर्ड कर रहे हैं, इंडिया में ये हो गया, ये हो गया। अरे हम सबको पता है, हम इस ग्रुप में बैठे हैं, हमें सब पता है आगे हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि व्हाट्सएप में तो मैं अगर अपने ग्रुप में लगाता हूँ तो आप सबको पता चलेगा, आपने लगाया हम सबको, ठीक है। हम बाहर क्या कर रहे हैं उससे, वो हमें करना है। उसके लिए लोकल लोगों से कांटेक्ट बढ़ाने। अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे एक मिसाल है कि हम कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं न्यूयॉर्क में, उसमें हम डिग्निटरीज को बुलाते हैं इंडिया से या अमेरिका की डिफरेंट स्टेट से, हम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। 1-2 कांग्रेसमैन आ गए। 2018 में हमने कांग्रेसमैन से कांटेक्ट किया था, कैलिफोर्निया से था। उसने कैपिटल हिल में हमारी एक कॉन्फ्रेंस रखवाई थी मुहाजिर्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर।
तो हमारे जो यहाँ पे दोस्त थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कांग्रेसमैन को, बोले इलेक्शन फंड में $5,000 डालो आ जाते हैं। तो $5,000 डालने पड़े ना, कहाँ से आएंगे $5,000? तो कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई कांग्रेसमैन कैपिटल हिल में ही करा देता है, उसका इम्पैक्ट अलग है। यहाँ पे मैं बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट अलग है। कैपिटल हिल में एक कांग्रेसमैन स्पॉन्सर करता है, अब इंडिया से आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं या अजीत दोवल साहब हैं या कोई भी एमपी है, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, किसी को भी हम बुलाते हैं, कांग्रेसमैन है, 3-4 और यहाँ के लोकल हैं, वहाँ पे हम एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भारत का मीडिया भी दिखाएगा, उस पर शोर उठेगा। कैसे होगा? वो खर्चा है। वो इस टाइप के प्रोग्राम करने के लिए हमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस भी चाहिए होंगे, एफर्ट्स भी चाहिए होंगी। तो अगर हम मिल के कोई एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आज सपोज हम 10-15 लोग हैं यहाँ पे उस ग्रुप में हैं, अगर हम अपने दोस्तों को उसमें डालते हैं, 40-50 लोग हो जाते हैं, फिर हम उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि हम छोड़ें एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम को, हम ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया चैप्टर भी रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन चैप्टर भी रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम भी रखेंगे, अरबियन गल्फ भी रखेंगे, और वहाँ से मुख्तलिफ लोगों को लेके फिर अब हम एक्टिविटीज़ वो करते हैं। अच्छा भाई, लंदन में करनी है कॉन्फ्रेंस, लंदन में कर लेते हैं, अमेरिका में कर लेते हैं, पर्सनल लॉबिंग करते हैं अपने कांग्रेसमैन से, अपने सेनेटर से, स्टेट काउंसिल से, थिंक टैंक से। अब यहाँ पे अमेरिका में कार्नेगी, हडसन, एक से एक थिंक टैंक पड़ा है जी। हमारे पास ये बैठे हैं, ही इज ए काउंसिल प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ ब्रुंसविक, ही कैन आंसर दैट क्वेश्चन प्रीटी गुड। यू नो कि आप कह रहे हो कि कांग्रेसमैन अगर आपको इनवाइट करना है तो दे आस्क फॉर मनी। वी हैव अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। I invite those people under my organization, and they gladly come for the sake of votes, you know. So we have never given them any money. On the contrary, we got proclamations from them. That's my personal experience, but he can enlighten on that better because he is Indian. किसी की बात करें वहाँ पे पैसे देने। DC में I can clarify that later, but because I spoke to Governor Murphy also कि वहाँ पे Trenton में यहाँ इनकी अपनी मीटिंग्स होती है, so I spoke to them. We want to do Hindu Heritage Month, क्योंकि लास्ट ईयर हमने सबने प्रोक्लामेशन लिए डिफरेंट सिटी से कि अक्टूबर जो है हिंदू हेरिटेज मंथ है। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं उनको कहती हूँ कि अगर हमने प्रोक्लामेशन लिया है तो उसको इतना बड़ा करो ताकि पता चले दुनिया में कि अमेरिका में अक्टूबर इज ए हिंदू हेरिटेज मंथ। वो कैसे कर सकते हैं? उनसे बात की, वो कहते हैं यस यू कैन book a hall there, and I can be wrong, but I have done it in the past, and that is at no cost because it's a public place for the people, and you can organize there, you know, but then people need to have to come together. It's not about मेरा नाम हो या उसका नाम, नाम से कोई मतलब नहीं है। तो इकट्ठे होके there are sources available, you know, in this country. तो ये हमको ये किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी वांट, मेरा आरिफ भाई से डिस्कशन हुआ था, भी आने वाले थे, तो क्या कर सकते हैं साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज कनेक्टेड विद मेनी कंट्रीज, Yes, or I can hear. activists in many countries. So what we thought is that if we can create that global forum and activists from different countries, and what he talked about chapter, right, Australia chapter or whatever, if we can collect first of all 2 चीज चाहिए और 3 चीज चाहिए, एक तो कंटेंट चाहिए, एक हमको एक्टिविस्ट चाहिए और दूसरा फंडिंग चाहिए। तो we can have collective content library, gradually obviously, कि भाई if we have to defend on a particular topic, तो हमारे पास क्या arguments है, क्या supporting है। For example, अगर इंडिया के अगेंस्ट बोलना है तो they will talk about कि भाई इतना माइनॉरिटी के ऊपर हो रहा है, या they will go to history and say कि इनके रिलीजन में सती प्रथा थी, इनके रिलीजन में कास्ट है,
right? They will have so many narratives. If we can have an argument against that, sati pratha thi, Counter. right? Counter narrative, right? कि भाई सती प्रथा थी, what was comparable to other religion? For example, in Christianity there is something called witch. अभी 1968 and 1969 में लॉ आया, तब तक witch hunting Yes. was going on. कौन उसके सामने बोलता है कि किसी को भी आप खुदा के बोल दो कि ये विच है, उसको मार डालो पत्थर से, बट nobody talks about it because हमारे पास ये नरेटिव नहीं है. बट इफ वी टॉक एट 20 डिफरेंट प्लेस, जब भी सत्य की बात है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, और हमने तो रिफॉर्म हमारे अंदर से किया. बट एनीवेज, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल. सो इफ वी हैव टू क्रिएट कंटेंट so that we can defend against various things, then we have to have activists like, you know, in different cities, different countries, and where needed we can collectively look after funding them. Because जब हमारे पास पुल होगा तो पैसा भी आएगा, because sponsorship आएगी, right? So that is what we wanted to do, is to first of all see how we can come together as a group, not only this but also other cities in US, other countries, through his connects and through our connects, is what. So he has started something. He has been doing on his own alone. I've been working with Arif by for last 4 years now. 4 years हो गए, ज़्यादा हो गए. 4-5 साल हो गए. 5 साल हो गए. तो 5 साल से हम लोग ने काफी टॉक शो भी किए हैं. मैं 1-2 बार लंदन में उनको मिला हूँ. So we thought that we can maybe, you know, do something, at least it brings few like-minded people together. So this year, October is right around the corner, right? We are in September, right? Last year, आपको शायद काफी लोगों को पता होगा कि different cities ने proclamation Yes. दिया था, declare किया था Yes. कि October is a Hindu Heritage Month. जैसे मार्च में आता है ब्लैक हिस्ट्री मंथ आता है, स्पेनिश मंथ आता है. अगर हमने किया उसको बड़ा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? To begin with, it's right next month. Set up a date, right? I can definitely help you guys, you know, if it's not in DC, in Jersey City, I can book the city hall over there. We have Addison Mayor who's Hindu, you know, make it a big, bring the media there and send that to India also, and at least take first step to advertise that October is a Hindu Heritage Month, bring the kids there. एंड आपने एक और बात कही थी कि यहाँ पे बच्चे जो है फैमिलीज है जिनके बच्चे नहीं समझ पा रहे कि मुस्लिम तरफ जा रहे या कैसे. I'm going to give you my personal example. मेरी बेटी हाई स्कूल में थी. My all children, 4 children are born and raised in America, right? हाई स्कूल में थी तो घर आके बात हुई ये बात. It was same topic बात हुई कि why we these things, and I explained my children very well. By profession I'm a teacher, I'm an educator, so you can tell, you know, from where I'm coming. So मैंने उसको कहा कि बात religion की नहीं है, बात किसी चीज की नहीं है. हम हिंदू हैं, हमारा एक कल्चर है, हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, राइट? उनका डिफरेंट वे है. ओके, कल आपके बच्चे होंगे, they're going to be very confused. Okay, किसको फॉलो करो? उसको करो, उसको. आप कहाँ गए? Do you want to live a life like that? You know, it was a very early age, you know. So understood, all of them are very religious culture, yeah, you know, and there's something job of a parents, and we need the parenting classes for our own parents, so they can explain to their children better. और उनको उसमें रखना चाहिए. सुबह घर में आरती करो, बच्चों को बिठाओ, दिन त्योहार के दिन सेलिब्रेट करो, उनको बिठाओ, दिवाली पे गिफ्ट दो, क्रिसमस पे तो देते ही हो. So these are the things we as parents need to modify here, so we can make a difference. We can talk about this, but take action. Let's do something about it. You know, हमें अभी मोदी जी के आने के बाद, I will say it मोदी जी because I don't have to worry about it. कोई मेरे को मोदी भक्त कहे या कुछ भी कहे, you know, उनके आने के बाद ये हिंदू तत्व का, हिंदू का बहुत अवेयरनेस हुई है. I hats off to him
You know, मैं 1980 में यहाँ थी, लास्ट वहाँ पे यहाँ डॉट बस्टर शुरू हुआ था. I don't know how many of you know. Okay, हिंदुओं को मारे थे डॉट बस्टर, and that is the time I started my Saraswati Cultural Association. And what was the reason? Same thing आपने जो कहा है, it's a lack of understanding on their part, and who's responsible to educate them? We are. Unless हम लोग उनको नहीं बताएंगे हम कौन है, ये बिंदी का मतलब क्या है, हम ये कर रहे हैं, they have very big misconception. So हमारे पे ये burden है, हम कैसे करते हैं, बातें करने से, you know, we all know the reality. And the reason you said that ये senator और ये, क्योंकि अपना एक हिंदू बताओ जो senator है और वो बिल लेके आ रहा है वहां पे, बताओ कौन है यहाँ पे. तो that is another thing, you need representation over there, and representation of those people who can outspokenly. Collective mind. It is a slow process. Yeah. It is happening. Oh, I'm so sorry. I got very passionate about it. It is happening. It is happening. Just slow process. But just again, I'm a हाँ, small ये person. शुरुआत है, बिल्कुल है. I'm a small person. I don't know everything, but I know something. I'm just sharing what I know. Sure. We do have organizations like HAF, Yes. Hindu American Foundation, Yes. and KONA. Yeah. There are two major organizations in the US that are very, very active. Absolutely. What we need to do, instead of saying हम एक संघ बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, we have to align with either of them. Yes. They are big, let's align with either of them. Agree. अब मैं आपको पूछूं कि माता जी define caste. How would you define caste? How would you define caste? How would you define caste? Everyone would have a different definition. Sure. We have to make sure our consensus and our thought process is the same. Okay. India is very diverse. अभी मैं बोलूं इस्कॉन वाले को बोलूं कि नहीं आप वहाँ पे गणेश मंदिर में जाके पूजा करें, वो नहीं आएगा. वो बोलेगा मेरे को कृष्ण के पास जाना है, I'll belong to कृष्ण. स्वामीनारायण जी उनको बोलूं कि आप स्वामीनारायण छोड़ के हाँ यहाँ पे आ जाओ, नहीं देते, you'll be with स्वामीनारायण temple. Hindu diversity is our strength, but we need to make use of that diversity. But under the umbrella of Hindu American Foundation or KONA, so our definition is the same and we belong to the same thing. No, I So agree with your मैं mind. कोरोना की गई थी Yeah. इस बार वाशिंगटन डीसी में उन्होंने किया था. जी. That was a very big step. This is the first time I attended it. So You know? so you know So that was in my बहुत mind. अच्छा है. but you know this Vivek Ramaswamy is openly saying he's a Hindu. Yeah. अभी देखो this guy forgot Louisiana, what's his name? Bobby Jindal. Bobby Jindal. He converted because he wanted power. Now because of that he realizes being Hindu is not a problem. If you are a Hindu, you own up to being set up. अभी क्या हो रहा है? अभी actively आज की तारीख में न्यू जर्सी से this person Audrey Trushke, I don't know if you know that. Yes, Audrey yes, Trushke. Audrey, Okay. yes. So Audrey Trushke and her gang, along with the Indian American Muslim Council, they are actively maligning Vivek Ramaswamy for saying he's faking that he's a Christian. His religion is Hindutva. His religion is the one actively, hurting the Christians and burning Christians in India. So you look at social media. So what we need to do is we need to support people who are standing up for it. We need to support people like Vivek Ramaswamy. We need to support people like Krishnamurti karke, there's a Raja Krishnamurti. We need to support people like that are openly Hindu and they are doing good. Like New York City, I am from the city. There is this person called Jennifer Rajkumar. She's openly standing. She actually made Diwali as a holiday. Yes. Yes. It is a big thing. So that's what we want to do, So, right? yeah, so the question instead of like again, so we are not. So can I interrupt there First please of all, to just tell you what clarify. is happening? Since 1974 I am here. Whenever any organization is there, we are always willing, if somebody is standing as a Muslim guy who comes and then he takes in charge of everything, then we all go behind him and then elect him. Because we don't have anybody to stand. Yeah. That is our problem. So Anybody don't want to stand. Even in Jersey you see, in Jersey also you see, एक मुसलमान खड़ा हो जाएगा,
सभी उसके बस जाए, जहाँ सिख खड़ा हो जाए, सिख मुस्लिम go together. हाँ. Excuse me, I'm not against, but I'm just telling what is reality. Agreed. Because you know what? Not all. I'm not. Khalistani and Muslim together. Yeah. No, I'm not against You cannot anything. say. No. You cannot say. I am. You cannot Because say. you. Take your words back. No, say no, Khalistani. I am not Take your word against back. them. Take your word back. No, Take your word back there is a- and say there is- Khalistani. okay, You there you cannot say that. Please. Yeah, I'm not it's a saying that. clarification on You that. just said it. No. Sir, clarification on that. If you read Guru Granth Sahib, if you read all the, I tell Arif भाई को पूछने का है, Arif भाई सभी को इस्लाम पढ़ने का कि नहीं पढ़ने का? I'm asking a question. Is Hindu should read Quran or not? No. Why not? should we read? Why If you should don't we know read Quran, how you going to argue with? I consider Quran as a book. With that Quran as a book. No. First read our book. But then As your a book, time. I'm First saying read our book, then your time. I am saying as a book. I am not saying anything. That's fine. I think coming back to the topic. Coming back to topic, I had a question which I Yeah. didn't finish. Yeah. Please, if I can finish that Yeah. last part, the funding part, right? So Arif ji, people like you are gem, but you have small resources in terms of funding, as you yourself said, and there are many groups like you, which are throughout US. Doing good work in the small limited way. I think a few months ago I was there at Rani Malhotraji's book launch, and that's also one gem of a person who has been doing a lot of things. It was little disappointing to see the amount of money that we could raise on that day, because I was hoping for at least any such meeting by a Christian or a Muslim group or some other non-Muslim group would have raised lots of money, and what we raised was not enough. And I'm sure that you, as you said, you're living in a rented house in London. That also shows that basically you're devoting so much time and energy here that you do not have enough. And individual contributions of $10, $100 from 10, 15, 20 people is not going to will make some difference, but not a whole lot of difference. Where I'm coming from is, how do we bring in some kind of corporate funding or some kind of big money into actively helping groups like yours, and making sure that at least while they're fighting at so many different fronts, finance is not one front where they have to struggle a lot, because that is the biggest killer. Many people come with new ideas, but they just burn out, die out, they just fall background saying, "Bhai, maine kar liya, but ab main kuch nahi kar sakta." So that was the main thrust of the question. देखें, पहले तो मैं 2 पॉइंट क्लियर कर दूं. एक तो सिखों का और खालिस्तानी का जो आप कह रहे हैं, लंदन में जितने भी गुरुद्वारे हैं ना, उनके बाहर भिंद्रावाला के पोस्टर लगे हुए हैं. ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एवरी सिख इज नॉट खालिस्तानी, बट मोस्ट ऑफ द सिख्स आर कन्फाइंड टू देयर सोशल सिस्टम. तो गुरुद्वारे ओवरसीज में जो है ना, इंडिया में कहीं भी नहीं, लेकिन ओवरसीज के मैंने जो देखा है ना, गुरुद्वारे टेकन ओवर बाय खालिस्तानी फोर्सेस और कॉमन. जी सर, इंडिया में सबसे ज्यादा गुरुद्वारों में भिंडा वाले की फोटो है ना, न्यूयॉर्क में है, और मैं पटियाला की पंजाब की बॉर्न हूँ. मैंने 84 का सब अपनी आंखों से देखा हुआ है. और आपने कहा ना हर सरदार, सर हर सरदार को अगर आप पूछेंगे ना खालिस्तान चाहिए, तो वो कहेगा यस. ऊपर से वो कहेंगे नो, आपको दिखाने के लिए बोलेंगे नहीं, हम सब एक हैं हिंदू, क्योंकि वो हिंदुओं में रहते हैं. लेकिन हर किसी की इच्छा है, जो मैंने आज तक देखा है, मेरी एज भी 60 होने वाली है, लेकिन हर किसी के अंदर ये चीज भावना है. हम भी आज का वहाँ पे भी मिलवर्तन जो बिहेवियर आपस में एक दूसरे का देखते हैं आज भी, लेकिन हर किसी के दिल में खालिस्तान का है. मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से. मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन. So that is was my point, that the Sikh people with turban, एक बात बताओ, Punjabi people are different. मेरी बात सुने. मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, बच्चे आजकल कर रहे हैं ये बात नहीं है. देखें, एक मिनट. मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड में, इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच होता है ना, तो ग्राउंड में हजारों सिख भी होते हैं इंडियन जर्सी में. दे आर नॉट अगेंस्ट इंडिया, दे आर नॉट, देर आर फ्यू, लेकिन वो पावरफुल है. लेकिन मैं हमेशा डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि सिख, देखे
खालिस्तान मूवमेंट इज एन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहाँ होती है? जहाँ पे एक कम्युनिटी को एट्रोसिटीज फेस करनी पड़ती हैं, जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है, एजुकेशन में। सिखों को इंडिया में कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनको वो अपनी 2% पॉपुलेशन में का हिस्सा हैं ये, लेकिन आर्मी में 2% से ज़्यादा हैं, सिविल सर्विस में 2% से ज़्यादा हैं, फॉरेन सर्विस में 2% से ज़्यादा हैं, बिजनेस में इनको कोई रुकावट नहीं। इनके जितने गुरुद्वारे इंडिया में हैं वो सिखों के कंट्रोल में है, उसमें कोई मुस्लिम हिंदू इनकी कमेटी में नहीं है। तो देयर इज़ नो इंग्रेडिएंट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट फॉर खालिस्तान, इट इज़ ए पाकिस्तान प्लॉय। 2019 से पहले मरी हुई थी सिख की खालिस्तानी। 2019 से पहले इमरान खान जब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बना, इन्होंने कहा कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370, कश्मीर की दुकान बंद हो गई, नई दुकान खोलो, वापस खालिस्तान को जिंदा किया गया। मैं जिनीवा में था 2019 में, तो मैं कवरेज करता हूँ मुख्तलिफ चीज़ों की। मुझे किसी ने कहा कि खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट है और रैली आ रही है जिनीवा ट्रेन स्टेशन से यूनाइटेड नेशंस तक, 1000 आदमी हैं उसमें। अब जब वो रैली आई करीब, तो आगे 15-20 सिख थे, बाकी पीछे पाकिस्तानी पंजाबी थे। फ्रांस से, बेल्जियम से, हॉलैंड से, लंदन से भर भर के गाड़ियाँ आई थी। उसमें मैं भी 20 साल बेल्जियम में रहा हूँ, तो मेरे साथ बेल्जियम में अजाइलम सेंटर में एक लड़का था पंजाबी, गुजरात पाकिस्तान से। तो वो मुझे मिला, मैंने कहा तू क्या कर रहा है इधर? कहता ये ठेका मुझे मिला है और ये खालिस्तान का ठेका मैं चला रहा हूँ। मैंने इटली से 2-3 सिख पकड़े जो जॉबलेस थे, मैंने फ्रांस से पकड़े, ये आगे जो 15-20 खड़े हैं ना, ये अजाइलम सीकर हैं, ये अपनी अजाइलम पक्की करा रहे हैं, बाकी सारा पीछे अपना कश्मीरी और पाकिस्तानी है। तो ये है एक मिनट, तो खालिस्तानी मूवमेंट है ना, इज ए पाकिस्तानी प्लॉय जिसमें ओवरसीज सिख काफ़ी मिले हुए हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं। ड्रग्स में, ह्यूमन स्मगलिंग में जो सिख इन्वॉल्व हैं वो उसमें हैं। आम सिख है ना, फिर उसको गुरुद्वारा जाना होता है, वो कहता है हम पंगे में नहीं पड़ते, वो चुपचाप गुरुद्वारा जाता है, माथा टेकता है, वापस आ जाता है, लंगर खाता है। वो कमज़ोरी है उनकी, जैसे हिंदुओं की भी कमज़ोरी है ना, हम लोग खामोश रहते हैं, हम लोग कहते हैं हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है। वही सिख कर रहे हैं, वही मुसलमान कर रहा है। पसमानदा मुसलमान और अशराफिया मुसलमान, 2 क्वालिटीज है ना। 90% पसमानदा है। अकबरुद्दीन अवैसी का बेटा कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट करके जाता है, लेकिन आम मुसलमानों को कहता है मदरसा में पढ़ो। आपकी आरफा खानम शेरवानी हवाई में वेकेशन मनाने आती है, लेकिन आई स्टैंड विथ बुर्का। ये आम मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को, मेजॉरिटी को, और वो कन्फाइंड होता है सोशल सिस्टम में। हमारा सोशल बैकआउट हो जाएगा, हमारी बेटी से कौन शादी करेगा, हमारा ये हो जाएगा, वो डर के छुप बैठे हैं। हमको उनको जगाना है, चाहे वो सिख हैं चाहे वो मुसलमान हैं, उनको जगाना है कि तुम्हारा देश है भाई खतरे में, मिल के चलो। हम ना हिंदुत्ववादी हैं, ना हम चाहते हैं कि दुनिया भर के लोगों को हिंदू बना दें जैसे मुसलमान चाहता है कि दुनिया भर के लोगों को मुसलमान। हम कहते हैं भाई जो जैसा है हमारे साथ जियो और जीने दो वाली पॉलिसी पे चले। इस तरह हमको सबको मिलाना होगा। जी आप कुछ कह रहे थे। सबसे पहले बात, आप यहाँ आए तो शुक्रगुजार है आपसे। मेरा नाम देव कार्लेकर है सर, आपसे 4-5 साल से। आपसे तो काफी पुराने वो हैं। नो प्रॉब्लम, पर पहली बार हम मिल रहे हैं। तारिक भाई, तारिक भाई, आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। हम सब डेरेल कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। लेट्स फोकस ऑन पाकिस्तान, ठीक है, जो कि एक नासूर होके भारत को खोखला कर रहा है बॉर्डर से। तो यहाँ पे बहुत ऐसी ब्रांचेस है इस्लाम में, एज यू नो 72 ब्रांचेस है। तो जिसमें आप देखें कि बलूच है, उनके साथ भी जातियाँ होती है, खोजाज है, इस्माइली है, बोरीज है, आप भी अजाक से हो, गुजरात के उस साइड से। तो इन सबका दमन होता है, जो भी शिया है, मारते रहते सुन्नी हो। तो यहाँ पे बहुत सिंधी, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज है सिंधियों की, खोजाज की, बोरीज की, बलूचों की, और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो हमारे कॉज को आते हैं। जैसे कश्मीर का हम जब जनवरी में करते हैं कश्मीर संविधान दिवस 18 जनवरी, तो हमारे साथ आते हैं। जब आप हमारे साथ खड़े होते हो, व्हेन आई एम सेइंग पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, आवाज बुलंद होती है, ठीक है, क्योंकि यू आर फर्स्ट टाइम। हम कहें तो बोलेंगे आप तो भारत मूल के, लेकिन आप जब आके कहोगे तो आप बोले भाई मैं तो पाकिस्तान मूल का हूँ। जैसे तारिक भाई हमारे साथ आते थे, गुजर गए, इंतकाल हुआ उनका। तो व्हाट वी नीड टू डू, एंड आई इको
आई को विद हिम आल्सो, एचएफ बहुत उम्दा काम करता है, डीसी में बैठे हैं और अपने खुद से जेब से सर 60-70% आमदनी दे देते हैं कॉस्ट के लिए, आपके जैसी है सर, पूरे फकीर आदमी, तो दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड एज यू राइटली सेड वी हैव टू सपोर्ट देम, बट एट द सेम टाइम जैसे आप हो, आपके जरिए ताहिर बुरा जी के जरिए वी नीड टू हैव एन आउटरीच टू लॉट ऑफ सिंधीज, बलूच, इस्माइलीज, बोहराज, जो भी कुछ और है, बाकी जो सेक्ट है जिनका दमन हो रहा है, और उनको साथ एक आवाज बुलंद करें। दूसरी बात कंटेंट, एज यू वर से कंटेंट इज द किंग आज के टाइम, जैसे उन्होंने कहा सत्य प्रथा, काउंटर, एक तो हमारा काउंटर नैरेटिव चाहिए और दूसरी बात हम आप निकाह लाला क्या होता है, ठीक है, बिगमी क्यों होती है, ठीक है, आप अपने कजन के साथ शादी करके क्या डिफॉर्मिटी होती है नस्ल में, आने वाले नस्ल में, इसके बारे में अगर आप, जरूरी नहीं आप हमेशा आके मिले, आप कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हो, वेब कॉल भी कर सकते हो, उसको डिजिटल मीडिया जैसे इंटरनेट के द्वारा पुश करके आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को व्यूज दिखा सकते हो। सो एज ई सेड, इनका जो प्लेटफॉर्म है, तो वी ऑल कैन कम टुगेदर, जैसे आज का ये सेशन था, वी कुड रिकॉर्ड दिस सेशन इन जनरल में बता, एंड आई विल मेक श्योर, ही विल मेक श्योर, आई विल, मेरी भी आईटी की कंपनी है आरिफ भाई, हम मिलियंस ऑफ पीपल को पहुंचा सकते हैं, वही करना है, वही करना है, क्योंकि दिखता है वो बिकता है, अमित शाह भाई ने भी बताया, ठीक है। दूसरी बात, एंड आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट विद हिम, जो हमारे सिख भाई बहन है ना, ये खालसा है, हमारे दसों के दसों गुरु हिंदू थे, हमारे पंच प्यारे हिंदू है, गुरु ग्रंथ साहिब जिन्होंने लिखा 42 के 42 लोग हिंदू थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो हमारे 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की रचना की, क्यों की, टू फाइट अगेंस्ट मुगल्स, जिस बंदे ने, तो गुरु ग्रंथ साहिब में फरीद बाबा सभी की साखी है, इस्लाम की भी साखी है, आप, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है और आई नो अबाउट इट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो देयर इज पासा है उसका, इस्लाम का पासा उसमें है। सर जिस बंदे ने अपने पिताजी की शहादत दी 11 साल की उम्र में, जितने 4 वो सैक्रिफाइस की तो हमको सबको मालूम है, वी नो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सिख इज द वन हु सेव्ड हिंदुइज्म, वी नो दैट। प्लीज लेट हिम कंप्लीट। इनकी चद्दर कहते सर गुरु तेग बहादुर, तो अगर आप सिख को बोले ना सर, तो नहीं वो नहीं करता हूँ, नहीं मैंने वो नहीं कहा, आप गलत समझ रहे हो, वो उनका मतलब जो सिख जो है वो खुद को हिंदू नहीं मानता, सिख खुद को हिंदू नहीं मानता, मैं पगड़ी वाला की बात करता हूँ, पंजाबी की नहीं बात करता हूँ, देयर आर टू, पंजाबी सिख इज डिफरेंट, रामगढ़िया सिख इज डिफरेंट, देयर आर सो मेनी देखो, हम हिंदुओं के बारे में बात करने आए हैं और हमें अपने को प्रमोट करना है, क्रिटिसाइज करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी बात सुनिए, आप देखें लास्ट ईयर 15 अगस्त को हमने एक डिस्प्ले ट्रक लगाया जिसमें भारत की पॉजिटिव्स दिखाई, किसी के खिलाफ बात नहीं थी, वो पूरे लंदन में घुमाया, तो जब हम घूमते घूमते भारत के हाई कमीशन के सामने से गुजर रहे थे तो वहाँ पे 50-60 सिख प्रोटेस्ट कर रहे थे खालिस्तान के लिए, ठीक है, मेरे साथ ट्रक में दर्शन सिंह नोगी बैठे हुए थे सिख, ठीक है, हम दोनों उधर ट्रक रोका, हम दोनों ने तिरंगा उठाया और उन 50-60 सिखों के सामने खड़े हो गए, हमारा झगड़ा, वो वीडियो भी वायरल हुई, ठीक है। मेरे साथ दर्शन सिंह जी सरदार थे, पगड़ी वाले सिख थे, तो है ना, उन्होंने खड़े होकर तिरंगे को लहराया और अपने खालिस्तानियों के सामने देखे, है ना, वही कह रहा हूँ कि खालिस्तानी एक उनका ताल्लुक ना सिखिज्म से है ना किसी धर्म से है, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनका अपना पैसे की लालच है, जो भी है। आपकी बात बाकी देखिए भारत में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सिख रहते हैं और सब, मैंने बताया ना मैच में आपको कितने सिख मिलेंगे जो भारत की जर्सी पहन के सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं चलता कौन खालिस्तान वाला है और कौन नहीं है। अरे भाई मैं आपको ये बताऊं, कितने हिंदू से अगेंस्ट हिंदू काम करते हैं, आप तो क्या बोलेंगे? देखो आप सुनिए, टेररिस्ट हर कौम में है, आपको पता लगता है? नहीं उसको आई डोंट बाय इट, लेकिन आई डोंट बाय इट, अगर 100 करोड़ हिंदू में एकाध है कोई एक्सट्रीमिस्ट सोच का, यू कैन नॉट कंपेयर विद अदर,
इन मुसलमानों में तो अनफॉर्चुनेटली दे गेट अ प्लेटफॉर्म टू डू प्रोपेगेंडा। आप मुझे एक सुसाइड बॉम्बर हिंदू दिखा दें हिस्ट्री में से, मैं आपको 5000 दिखा देता हूँ मुसलमानों में से। उन्होंने कहा ना कि एवरी राजेश जी है, ये हमारे राजेश जी इज अ पॉलिटिशियन। जी राजेश जी, नॉर्थ ब्रॉन्सविल हमारा टाउन है, वहाँ के इज अ काउंसिल प्रेसिडेंट व्हिच इज लाइक अ डेप्यूटी मेयर। हाँ, लेकिन देखें मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट, सॉरी बट एवरी टेररिस्ट इज मुस्लिम, ये फर्क है। जी जी अच्छा, the main point that I am more interested is how to change the narrative that the State Department, that the overall Western media, all the Western governments, they get all that information from the Western media, and they keep saying that there are human rights violations against minorities in India. That is where I think, I know that there are problems in Pakistan, I know there are problems in China, but there are enough. I want to see through your medium how we can promote, we can correct the narrative and explain to everybody that, you know, that has RSS ever become a terrorist? They are about 8 crore people who are RSS, but has anybody become a terrorist? Has anybody killed anybody? So these are things how we can help. मैं इस पे आता हूँ। पहले एक और बात याद आई, वो मैं बता दूँ कि यहाँ पे बैठे हुए लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, मैं उनका आभारी हूँ। मुख्तलिफ टफ टाइम में मेरे साथ खड़े रहे, और हम लोग जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम उसी तरह से निकल सकते हैं जब आप जैसे लोग हमारे सपोर्ट में होते हैं। तो थैंक्स टू दोज पीपल। दूसरी चीज़, मुझे एक और चीज़ याद आई कि मैं एक दोस्त का मैसेज आपके सामने फॉरवर्ड करूँगा। देखिए, हम लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ कैपेसिटी में काम करते हैं। एक काम है कि पाकिस्तान में जो 1 करोड़ हिंदू रहता है ना, उनकी ज़िंदगी, उनका धर्म ख़तरे में है। लास्ट ईयर जब मैं इंडिया गया ना, तो मुझे डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी ने दावत दी थी कि जोधपुर और जयपुर की हिंदू बस्तियों में आओ जो पाकिस्तान से आए हैं। तो मैं जोधपुर जब गया ना, तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी कराची का हिंदू मुझे मिला। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम वहाँ पे क्या करते थे? तो उसने कहा मेरी 10 दुकानें थीं। तो मैंने कहा कि तो फिर सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके झोपड़े में रह रहे हो, 40 डिग्री में छत भी नहीं है, तुम्हारी बच्चे तुम्हारे नंगे पांव घूम रहे हैं। तो कहते हैं धर्म बचाना था ना भाई, अगर मैं वहाँ पे मुसलमान हो जाता तो मैं वहाँ पे सुकून से रहता, मेरी बेटियाँ भी हिफाजत से होती और मेरा बिजनेस भी हिफाजत से होता, हमें कोई मसला नहीं था। लेकिन वो रास्ता मेरे लिए गलत था कि मैं मुसलमान हो जाता। मैं धर्म बचा के आया हूँ। डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लाखों डॉलर का खर्चा है। क्यों कि आप एक फैमिली को पाकिस्तान से लाते हैं, उसका वीज़े का बंदोबस्त, उसको लाना। फिर मैंने वो बस्ती में देखा, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रोहिंग्या मुसलमान आता है ना, तो केजरीवाल उसको पूरी बस्ती बना कर देता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता है, फ्री पानी देता है। ये हिंदू आए, इनको बेचारों को बहुत तकलीफ है, कोई सरकारी मदद नहीं है। ओमेंद्रा रत्नू जी जैसे लोग पूरी बस्ती, 35,000 लोगों की बस्ती चला रहे हैं। बच्चों के एजुकेशन के मसले हैं, हेल्थ के मसले हैं। ये उनकी धर्मांश फाउंडेशन है। वो कहते हैं मुसलमान 2.5% ज़कात देता है हर साल। हर मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी का, सोने का, पैसे का 2.5% ज़कात देता है। हिंदुओं में ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर रेगुलरली धर्मांश फाउंडेशन को कोई कंट्रीब्यूट करता है, वो बहुत बड़ा कोर्स है। हम जो कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, लॉबिंग है। वो एक ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हिंदुओं को बचा के निकाल रहे हैं, वरना पाकिस्तान से हिंदुओं का सफाया हो रहा है। भारत आ जाए, बच तो गया, वहाँ पे मुसलमान हो जाता है। कितने फोर्स कन्वर्जन के केसेस हैं, उन सब के खिलाफ ये वहाँ पे पाकिस्तान में भी ग्राउंड पे मदद कर रहे हैं। तो धर्मांश फाउंडेशन का उनका मैसेज था कि उसको सपोर्ट किया जाए, वो उनका मैसेज था। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो तो अच्छा, अब उस पे ही हम बैठे हैं। वही बात हुई ना हमारी कम। Learning about Hinduism is
good, but also to change the Hindu-fobia को निकालना So है. idea is that it all starts with content. हमारे पास argument हम कोई अलग-अलग आदमी अलग-अलग argument करेगा. We don't have strong argument. तो content creation, content library वो हमको collectively करना है. So collective activism, content and currency. If I were to put in 3C, collective activism, content and currency. वो हमको 3C की जरूरत है. So at least if we start from activism standpoint and contribute towards collect. Once we have activism, there will be more volunteers. Then content will automatically start emerging, and then funds will also start coming because then there is at least we can do and some lobbying. We can do certain, for example, कहीं पे जाके हमने कुछ activism ही कर दिया as a volunteer. उधर से funding आएगी, sponsorship आएगी, corporates will come if we have a might. If we don't have a might, corporates won't come. Even senators and they will come because, as she said, right, it's not always for money, for votes. If they see that this is a strong foundation and I can make them talk about their issue in my campaign, और मेरे campaign में वो लोग आके बोलेंगे तो I can attract some vote, they will support you. Yeah. So I think that's where collective activism, and I completely agree. We don't want to start something completely new. We actually work with. In fact, मुझे चाहिए था कोना से बात करना था, बात भी की थी. But we can, once we have something, because what I'm trying to do with Mr. Arif is, he has far more international connect and he works with UN and in the Human Rights Council for last 29 years now. So he's a lot of human rights activist. So we can take that and spread beyond US. देखें, एक और चीज़ है कि आपके पास नॉलेज है, पावर है, लेकिन आपके पास विल नहीं है तो कुछ नहीं है. मेरे पास नॉलेज नहीं है. मुझे कितने हिंदू आके कहते हैं कि हमने हिंदुइज्म तुमसे सीखा. रहे मुझे कहाँ आता है हिंदुइज्म, मैंने तो अभी स्टार्टिंग में हूँ. इसका मतलब ये है कि जब मैंने अपना मैसेज दिया कि गीता पढ़ने से परिवर्तन आया मेरे अंदर, तो कितनों ने गीता पढ़ी. ठीक है, तो मेरे अंदर वो करेज है, मैंने रखी सामने. इसी तरह मुझे एक सिख दोस्त का मैसेज आया लंदन में कि यार तुमने जिहादियों से तो पंगा लिया हुआ है, खालिस्तानियों से भी क्यों पंगा ले रहे. तो मैंने कहा यार मुझे डर खत्म हो गया, मैं सच बोलने से अब नहीं डरता. तो हमारे पास नॉलेज है लेकिन हमारे अंदर वो करेज नहीं है, तो फिर वो नॉलेज का फ़ायदा नहीं. हमारे पास पैसा है लेकिन हम कहते हैं यार नहीं यार, नज़रों में आ जाऊंगा मैं इस सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा तो लोग कहेंगे ये हिंदूवादी है. तो ये डर निकालना होगा हमें. डर और खौफ से निकल के 4 आदमी तक भी मैसेज पहुंचाते हैं ना, दैट इज समथिंग. तो मेरे पास नॉलेज की कमी है, मैं कोई स्कॉलर भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरे पास है मैं सामने रख देता हूँ. आपका जो यूट्यूब चैनल के जरिए, फेसबुक चैनल के जरिए जो आप लोगों से मुखातिब करते हो, तो उसको भी फ्रॉम टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग करके उसको मोनेटाइज भी किया जा सकता है. मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज्ड है, लेकिन वो फिर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, राइट. उसको आपसे मैं ऑफलाइन बात कर लूंगा और कुछ करके, जैसे आपको दिन के $5 और $10 आ रहे हो, उसको हम $50 और $100 में कर सकते हैं. इट्स अ सिंपल टेक्नोलॉजी है, राइट. ये सारा काम इंडिया से हो सकता है. कंटेंट की सेइंग गिरन बाय सेट, राइट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया. हमारी 145 करोड़ की आबादी है और बहुत सारे हैं, संघ परिवार से है, VHP से है, बजरंग दल से है, एंड वी ऑल आर एजुकेटेड पीपल. So lot of people, youngsters there, they have lot of content or they could write lot of content. तो जैसे कोना है या फिर HF है, इन सबको हम कंटेंट कोलेक्ट कर सकते हैं. और जैसे आप कर रहे हैं ना, तो आप इट्स वेरी फोकस कि भाई हमें पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन. देखिए मेरा एक जो जिंदगी का मकसद है ना, मैं तो खुल के कहता हूँ कि डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान. इसलिए आर्टिफिशियल स्टेट है, जब तक है सुकून नहीं आ सकता. ना ईरान में सुकून आएगा, ना अफगानिस्तान में, ना इंडिया में. पाकिस्तान को सुकून आएगा. और सबसे ज्यादा तकलीफ में पाकिस्तानी खुद है. ठीक है, पंजाब की आर्मी सिंध और बलूचिस्तान को लूट के पूरी दुनिया में आतंक फैला रही है. वो सिंध और बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएंगे, पंजाब के पास कुछ भी नहीं बचेगा, लैंड लॉक पंजाब होगा. और हल यही है कि आज़ाद सिंधु देश, आज़ाद बलूचिस्तान, आज़ाद पख्तूनिस्तान, ये रीजन बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा. भारत 65 साल तरक्की इसलिए नहीं किया गया
कि भारत को उलझाए रखा पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ 24 घंटे हो रहा था, कभी कश्मीर में हो रहा है, कभी त्रिपुरा में हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है। अब मोदी जी पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं। करंट सरकार की ये खूबी है कि इन्होंने कहा व्हाट पाकिस्तान, कुछ भी नहीं। मैं जब मुंबई गया 1990 में, तो एक पाकिस्तानी रुपये के मुझे ₹1.30 भारत के मिले। आज पाकिस्तानी 3 रुपये के बराबर भारत है, इसलिए कि भारत ने कहा पाकिस्तान हमारा इशू नहीं है, अपनी तरक्की कर रहे हैं। अब आते हैं वापस धीरेन भाई वाले पॉइंट पे कि हमें कलेक्टिव एफर्ट करनी है, हम इस पे तो एग्रीड हैं। अब क्या आप बताएं कि किस तरह टू स्टार्ट विथ, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, जो अभी हमारा जो ग्रुप है इस मीटिंग का, उसी को हम नाम चेंज करके आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं कहता यह हूँ कि हमें सिर्फ उस व्हाट्सएप ग्रुप तक नहीं रहना, हमें बाकायदा प्लान करना है। जैसे कैपिटल हिल में, जैसे हमारी बहन ने कहा कि वो सेनेटर से बात की जा सकती है, कैपिटल हिल में हम ग्लोबल हिंदू-फोबिया के ऊपर एक प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको हम मिल के डिस्कस करें। और मैं आ जाऊंगा लंदन से वाशिंगटन 2 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, और बाकी हम किसी स्पीकर को बुला सकते हैं करके इस तरह के प्रोग्राम करें। और किस तरह हम लॉबिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, थिंक टैंक्स में। आपके वाशिंगटन में हडसन में हुसैन हक्कानी साहब होते हैं, पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर। मैंने उनको फ़ोन किया था कि मैं अमेरिका आ रहा हूँ, तो आऊँ वाशिंगटन आपसे मिलने के लिए, कुछ गाइडेंस के लिए। तो उन्होंने कहा मैं तो दुबई में हूँ 1 महीने के लिए। तो ये है कि थिंक टैंक्स हैं, उनसे कांटेक्ट बढ़ाएं। खाली आप हडसन की बात करें तो हडसन के वेबसाइट पे आपको कोई 40-50 प्रोफेसर्स के ईमेल एड्रेस मिल जाते हैं, उनसे 1-to-1 कांटेक्ट किया जा सकता है। इस तरह की हम जब कॉन्फ्रेंस करेंगे तो 4 प्रोफेसर्स भी उधर दावत दी जा सकती है कि वो भी आके स्पीच करें। और हम किसी को डिक्टेशन नहीं दे रहे कि आप ये बोलो, आप सच बोलो भाई, आपकी नज़र में जो सच है वो बोलो। तो ये करके हम कलेक्टिव एफर्ट किस तरह कर सकते हैं, इसको डिस्कस करना है तो बताइए। Yeah, I'm not here to talk about Kona, but I attended their second event in Washington DC. I wasn't there for the first one. This year I went. It was on the point. They did bring the speakers who came with all the data, and they were not Hindus. Okay, and they showed all the data कि जैसे आप कास्ट सिस्टम कह रहे हो, और भी कौन से धर्मों में कास्ट सिस्टम है। He gave the very good presentation. He was from, I believe, Australia, professor in Australia. You're talking about Salvatore Babones. Yeah, I actually organized an event for Salvatore in Long Island. Okay. On Were you there in Washington DC this year? I didn't go to Washington DC. It was. I had Salvatore present in Long Island. And for that event, it was all about democracy rankings, why India ranks so low on democracy, and why there is issues with journalists, freedom of journalism and whatnot. उस event organize करने के लिए we had about 80-90 people at the event, all Hindus and mixed group, but Indian American Muslim Council, IAMC, basically had trucks saying he's a propagandist, he's a Modi fanatic, he's this, he's that. They came and they protested outside the event. They even came inside with placard saying "Isko nikalo." They threatened the library where we were hosting the event. Okay, how could you allow? This is a public area. How could you allow somebody who's a propagandist to come and spread hate in the US? Wow. So I'm saying their network is big. IAMC knows exactly what is happening. Even this event that you had, they probably know this is happening. They know it. So, in fact, Arif bhai asked me whether my name should be put. I said put, I'm not fearful. That doesn't matter. Yeah. So all I'm saying is, I'm going to continue my rhetoric, continue to support the local organization, local grassroots movement. And the narrative, like you asked for, the narrative is going to be created by somebody who is not a Hindu, somebody who is not from BJP, somebody who is not from VHP, somebody who is outside, like Salvatore Babones, who says it makes who is a humanitarian, like who studies humanities, who knows how the survey works. So all these surveys that they come up with saying that, oh, there is democracy is falling, कि कुछ खराब हो रहा है इंडिया में. They do survey, they do fictitious data. यहाँ पर, and then
It was And then really they, good. And then they come up with the argument saying that minorities are being oppressed, but it is contrary to that. So we need to know दूध क्या है, पानी क्या है. We need to and then focus our energy towards the one that is working. Yeah. I specifically know some great professors in New York City asking for funding. कि वो लोग काम कर रहे हैं and they don't get any funding. Nobody gives them any funding. Even HAF is struggling for funding. I'm sure you are as well. I mean, every person who's focusing for Sanatana Dharma is struggling for funding, even though they're trying to do the right thing. All I'm asking is choose your energy wisely and make sure that you support them through and through. So funding की बात जब आती है, because it's a religious event, okay? Religion के नाम पे कौन फंडिंग करता है? पाकिस्तानी लोगों को कौन फंडिंग करता है? जो मुस्लिम है पाकिस्तान कट्टर. अब खालिस्तानियों को कौन फंडिंग करता है? वो जो यहाँ पे गुरुद्वारे खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? वो करते हैं. अब हिंदू जो हमारी है, कितने हिंदू हैं जो मंदिर में या कहाँ भी हम लोग मंदिर जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, इजीली $10, ओके, रख देते हैं वहां पे. कहाँ जाते हैं किसी को वो फंडिंग जो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशंस को आनी चाहिए, वो हमारे हिंदुओं से आनी चाहिए, बजाय मंदिर में जाके देने के लिए. ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन को फंड करो. The issue is the issue. Sorry. I'm just sharing, adding to your point. हमारे हिंदू में क्या होता है कि if you put मंदिर में चंदा डालते हैं या फिर चैरिटी में देते हैं या अन्नदान देते हैं, पुण्य मिलता है. इसमें काम जो जूइश लोग ने बताया वो अगर आप लोग करते, अब लोग टैक्सेस आते हैं तो अगर भरना है तो 50,000 दे दें, 25,000 दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को देने का है, क्योंकि इनकम बहुत है. लेकिन जब यहाँ मंदिर में देने का है, कहाँ दे, तो ऐसा बोला $10 दे दो, 15 दो. वाई यू पेइंग सो मच टैक्सेस? When tax time comes, everybody is rich and they have to pay so much money. They're ready to give. Right. But when it comes to religion, non-profit organization, it's tax deductible. It is tax deductible, but I think the focus for us, we should first decolonize our mind. Decolonize our mind, make sure that any notion of colonization is not in your mind. Okay. I agree. So I think we are at 12 o'clock. What next steps? What next steps, right? My thoughts, first of all, that let's create only those who are interested. We have a much larger group on WhatsApp. WhatsApp is just for connecting, but not action has to be outside WhatsApp. But let's connect, and we have to connect with the right organization. We can't create our own new organization. Right. This is more between a bridge between Kona, HF, but other parts of the world jo hai. And Arif ji also. Arif ji through him other parts of the world. Like grassroots movement, make sure you're also aligned with the bigger picture. Exactly. But then do your grassroots, connect with the local council member, your local senator, could be, and then make sure you keep the so rather than creating our own separate chapter or organization, we want to create more like a forum rather than organization. Through that, we bring different organizations together across different countries. एक suggestion है. यहाँ पे बहुत साल पहले जब काफी कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ट्राई-स्टेट एरिया में, राइट, जो अपना कल्चर बेस्ड ऑन कल्चर, देन व्हाट हैपेंड, another organization came and said all the organizations are going to be under it, and that is called FIA. Its name is Federation of Indian Association. I hear you, it's not doing what it's supposed to be, right? It's not going with there, but what I'm saying is that maybe something like this you guys can start, where all the other Hindu organizations keeping their own identity and also be part of that umbrella. It's just such a suggestion. Is it going to work? I don't know. Or uska kya hota hai? The concept was supposed to be that Federation of Indian Association, all the Indian organizations will be part of this member, and then they will elect the board member and all those people from different organizations, not their own, which is happening now. I don't want to get into that, but
But think about it, but I don't know if it's going to work or not. I mean, honestly, I don't even know what FIA does other than organizing parades in India. Yeah. I don't even know what they do. I think it is just To start photo off, op. the concept was that. People come from photo op. I don't see any. But anyways, coming to next step, I right? am So I would suggest आरिफ जी अभी आप वो ग्रुप में लिखिए जो हमने क्रिएट किया है. What you collectively think? If you think that group should be renamed and you continue on that, or only create a new group so those who are interested can join that new group, so that we don't have unnecessary people who are not interested continue, so that there are only people who are interested come, whatever way you think is right. But let's do that. देखें, लीगल ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है. कोई भी आपको कांग्रेसमैन, सेनेटर या कहीं भी आप जाएंगे तो वो लीगल स्टेटस पूछेगा. अगर खाली ऑनलाइन है, आपकी एक वेबसाइट बनी हुई और ऑनलाइन है, उसको वो इतनी हैसियत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हम लोग दैट आइदर काम करें. आई थिंक दैट इज अ बेटर वे. Yes, I At this agree stage. with you. तो जैसे या तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है जिसको हम या तो हमें देखना होगा कि हम या तो कोई नई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराएं और फिर उसका एक सेटअप बना के उससे काम करें. व्हाट्सएप ग्रुप बनाना तो है, ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, वो नहीं है इशू. लेकिन आप किसी से मिलने जाएंगे तो वो पहली चीज़ ये देखेगा कि लीगल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है. तो या तो कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को हम ट्रांसफॉर्म करके उसमें वो कर सकते हैं, या ये तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि काम हमने मेजॉरिटी यहाँ से करना है. दुनिया को यहाँ से चलाया जाता है अमेरिका से. मेरा सोचना ये है कि rather than limiting to the group that we have, please bring people from other countries, then that will become कि कुछ है वो भी तो यहाँ पे हो ही रहा है. एक ऑर्गेनाइजेशन इधर हो. I'm sorry, I'm just going to add to it. Yeah. Every country has their own problem. No. No. Let me finish my thought. Australia has its own problem. Correct. Canada has its own problem. US has its own problem. Correct. I'm saying let's focus locally. Focus Hindu-fobia happening in New Jersey. I agree with you. Focus Hindu-fobia happening in New Jersey, and then align with the organization that is national in the US. So let's say California में कुछ हो रहा है या फिर Texas में कुछ हो रहा है, then you would know. Let's focus regionally. Internationally, it is too big. And if you say if you want to fight for whatever is happening in India, that is another different problem. Because you cannot, you cannot get people to align with whatever happening in India. You have to fight for what's here. I get you. Again, I'm not from here. I'm sorry. I'm not from here. I'm from the city. Yeah. मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो माफ करिए. No. Why I'm saying that. You are from this is tri-state area. Why No, it is not my. It is not my organization. Tri-state area. Why I'm saying that you bring people from other country because problems are common, solutions are also common, the approach may be different. Which is why you have social media. So that's why I'm saying You have social media for that. You don't एक need a group. देखो अरिफ भाई को बोलना है, अरिफ भाई को पूछो. Allow me to complete his statement. I'll tell you why I'm saying. When I said content, see, scattered content, social media versus an organized content, right, is a very different thing. When you see that somebody from your group that you know is doing something in, let's say, Australia or something in, let's say, Germany, the inspiration will be different than you see some random person doing in social media. So having that feeling of you being part of that, where one of your known person, colleague, whatever you look at it, is doing something in Germany, you will be inspired to do in your country. That's all I'm trying to say. Just like HAF is in US. Yeah. UK में there is Insight. What is that organization? Asian Human Rights Forum. No, Insight in UK. Insight, right? Insight. There is similar organization with that, and there is also similar organization in Australia. Exactly. So those organizations, they actually have a connection. And when you say about narrative and the content is already there. I agree. But we just need to propagate the content that is already there, prepared for American Indians here, Indians or Bharatiyas, everybody included. And What one thing I can Dhiren- offer that, one thing I can offer, because we both have an IT firm, okay? So my commitment is, Facebook क्या है, बहुत ही खराब हो गया है, उसमें अच्छा बुरा होता रहता है. Why don't we have our own Facebook, okay? इसमें हजारों, मैंने अभी लाखों की तरह से लोग घूस रहे हैं. तो इसको ये स्ट्रॉन्ग बनाए, कोई भी फॉर्म, I doesn't care. I want Hindu सनातनी, that's it. ओके, आप इसको लेके चल सकते हो. प्लेटफॉर्म हमारा है, बैक एंड हम सपोर्ट देंगे, पूरा सपोर्ट देंगे. कंटेंट आप लिखें,
हम पब्लिश कराएंगे धूम धड़ाके से, हमारे पास पूरे सोर्स हैं। तो इसलिए आईटी की चिंता मत करो, पैसे की आप बोल रहे हो, पैसा भी आ जाएगा, पैसा अथाह पैसा है लोगों के पास, बैठे हुए हैं खोज रहे हैं किसको दूं, ऐसे लोग हैं। ओके, तो पैसा कोई इशू नहीं है। My question, let's say if Arif Bhai is putting content in that, ठीक है, आप will spread, उसमें से कुछ फंडिंग उनको मिल सकता है टू राइट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स डू दैट सो दैट इट इज म्यूचुअली। देखिए हमारा जो ये प्लेटफॉर्म जो है ये C2C है, Because तो B2C monetize है, B2I&C है, बहुत ही एडवांस बना के रखा हम लोग। उसको हमको मोनेटाइज करना है। जी एक चीज कह रहा था कि एक छोटा सा लास्ट में सजेशन है कि जब हम ये इस टाइप के इवेंट्स करते हैं तो आप लोगों की तरफ से इवेंट कोऑर्डिनेटर रखिए जो कि बेसिक कोऑर्डिनेट कर सके कि किस सीक्वेंस में क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं, कौन किस वक्त पर बोलने वाला है, और जैसे हीटेड आर्गुमेंट हो जाए कभी तो कौन इंटरवेन कर सके, तो उसमें ऑर्डर बना रहेगा। कई बार क्या होता है कि ये इवेंट्स एकदम क्योटिक हो जाते हैं, इन द सेंस वी आर टॉकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस और द चीफ गेस्ट ही माइट हैव हैड something else also to talk about, and those things get drowned out. एक छोटा सजेशन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी शुरू किए ना, तो हम लोग लर्निंग कर्व है, आई अंडरस्टैंड दैट। वी हम लोग, हमारा नाम देवल गुप्ता है, तो हम बहुत ही एक्टिव है इसमें, खासकर बंगालियों को इसमें जगाना बहुत जरूरी था। So I have one suggestion. Arif bhai has so many members. We can easily give at least $100 a year. I'm talking only year. So even if it is 10,000 or 15,000, we can give $100 per year. He has that money, so he can do whatever he wants to do. Sure. That is what giving $5, $10. This doesn't mean anything. बिल्कुल सही। And we can afford that. खाना जाता है तो 200 का बिल देते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि वीक में जाता है कितना देते हैं, तो एटलीस्ट गिव $100 if we have at least 10,000 members, Arif bhai ko, so at least he has some finance. So he can move around, do around. It takes a lot of time to what he is doing. It's not easy. उसकी तबीयत भी खराब है फिर भी उन लोग करते हैं. We say seen that. So my only request is that please at least give $100. How do you give? He has his own Paytm, whatever he has his channels where you can give. एक चीज़ है कि हमें एक चीज़ और देखना होगा कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे काम करेंगे ना, हमें ज़रा डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। हम नाम ऐसा रखें कि देख के उसको ये ना लगे कि यार ये तो खाली हिंदुइज्म की बात करेगा। नाम मैसेज हमने जो देना है बाद में देना है ना, अपने अंदर नाम डिप्लोमेटिक रखना है कि जिससे ये ना लगे कि ये तो खाली हिंदुइज्म की बात करने आए हैं। किसी भी को आप लेटर लिखते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख के ही लेटर को इग्नोर करेगा, कर रहे ये तो खाली हिंदू प्रचार करेगा ये वो। हमें डिप्लोमेटिक, जैसे मैंने एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम नाम रखा है, मकसद मेरा चाइना और पाकिस्तान टारगेट करना है। वो ह्यूमन राइट्स का फोरम है चाइना और उसमें मैं रिलीजन की भी बात करता हूँ, भारत की पॉजिटिव्स भी रखता हूँ और थोड़ा यमन ईरान वगैरह भी डाल देता हूँ कि एशियन लगे। डिप्लोमेसी से चीज़ें चलानी है। तो हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करें उसका एक सेंट्रल ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने कोई जगह खरीदनी है या किराए पे लेनी है। वर्चुअल ऑफिस $10 $20। हाँ, तो वही तो या तो हम न्यूयॉर्क या लंदन में कोई इसका मेन ऑफिस रखें, और जैसे धीरेन भाई का ग्लोबल वो है तो उसका फिर ग्लोबल चैप्टर हो सकते हैं। न्यूयॉर्क में है तो फिर वॉशिंगटन में भी हो सकता है इसका, लंदन में भी, पेरिस में भी, जापान में भी। ये सब जगहों पे हमारे लोग हैं जिनसे हम कनेक्टेड भी हैं। तो हम एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस, और बाकी ज़्यादातर काम ऑनलाइन होता है आजकल, तो लोग भी घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर काम तो हमें ऑनलाइन करना है। एड्रेस के लिए पीओ बॉक्स भी लिया जा सकता है, कोई भी एड्रेस है वो देने के लिए, लेकिन रजिस्टर कराना ज़रूरी है। चाहे लंदन में रजिस्टर्ड है, चाहे न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है, कहीं भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। उसके ऑफिस बेरर्स होंगे हम में से, फिर जापान का चैप्टर है, ऑस्ट्रेलिया का चैप्टर है, फ्रांस का है, उसका एक एक आदमी भी हो तो हम उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। तो इस लाइंस पे काम करें तो मैं समझता हूँ कि वी कैन गो फॉरवर्ड।
Yeah, I think it's good thing to. So it's a why good don't you do one initiative. thing? You post in our group that this is the link to my Asian, Human Rights Foundation. Whoever we discussed today, this was the point we discussed. Whoever is interested can join. Once a month we are can working- meet on Zoom it's a or global, anything. It's a global forum. And we Yeah. can formulate a united policy And on myself, Zoom yeah. or anything. Once a month we can meet from everywhere in the world and different minds can connect. And my suggestion is keep it really global. Ah, Bring your, so that it makes it's a different impact when you have a group. Yeah. ठीक. So who takes up the task? I will work with you. Yeah, But I can do the IT part. मेरा business But पूरा if you, है. if you initiate the message Yeah. in that group, chances of people joining is higher than weaker. So we can make a core committee in the beginning who will work on these lines, and then we can bring more and more people Sure. on board from USA and from. I have some people in San Diego, Los Angeles whom I met and who are ready to work. I'll be going to Boston on 8th. Okay. I have a public program there also. I'll be going to Bentonville on 6th. Okay. So I will speak everywhere and we can bring a collective effort. And then we have people in India, of course. So people from India and Malaysia, many everywhere. Yeah. So the message can spread out everywhere then. Yeah, but one clarity, we are not trying to create one more. No. We'll work with With the likes same of Kona or Correct. right. और हिंदुत्व जो बताया आपने. Yes. Short and Yes. sweet. हाँ? सबसे पहले तो आज जाने से पहले आप सब यहाँ पे बहुत एक्टिव मेंबर है कम्युनिटी के एंड यू आर वेरी पैशनेट टू मेक अ डिफरेंस. जो अक्टूबर हिंदू हेरिटेज मंथ जब क्लियर कराया, अब आप सब एक अम्ब्रेला के नीचे आके उस अक्टूबर में एक डेट सेट करो जहाँ अपने हिंदू हेरिटेज मंथ को सेलिब्रेट करो और वहाँ पे प्रेजेंट करो कि हमारा जो हिंदू है सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु जो और वहाँ पे सेनेटर और जो अपने पॉलिटिशियंस हैं उनको इनवाइट करो. ओके, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क विद इन अ मंथ और मंथ एंड हाफ. ये टाइम में आप भी आओ. इम्पॉसिबल? नो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. आएंगे. अक्टूबर महीने में हम लोग लेंगे. चिंता मत, उसकी चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो. वो डेट जितनी जल्दी हो सेट आप करो. बताओ, क्योंकि अक्टूबर महीने में क्या है, दुर्गा पूजा होता है, तो हम लोग हाँ जी. मेरी वाइफ जो है 7 डिफरेंट पता है. दुर्गा पूजा में बहुत ही एक्टिव है. अब मैं वो सब जगह बाइबल गेट पर फ्री हूँ मैं. ओके, तो उसमें थोड़ा अब मैं आपको अपना स्केड्यूल आप बताती बताओ. हूँ हाँ. कि मैं अक्टूबर 28 को एक्सचेंज प्लेस पे वाटर फ्रंट पे दिवाली ऑर्गेनाइज की है. राइट. सो